Guys, welcome back to my YouTube channel. Another horrible background, but right now I know I look super weird, but I want to share this face mask with you guys. Already have it on. Okay, so note down the ingredients. It's 1 tablespoon multani mitti, half sorry 1.5 tablespoon of apple cider vinegar, and you add some water in it just to make it a paste, and then just put it all over your face. It will deal with dark spots, acne, pimple, dull skin, everything of that sort. जब मुझे अपनी स्किन बहुत डल लग रही होती है, बहुत वियर्ड लग रही होती है, तो फिर मैं ये वाला मास्क लगा लेती हूँ as I am in it right now. And I mean, it's on my face right now. And this cute band, this cute towel kind of a band is from Miniso. So I got this for like 250 rupees I think, and it is really cute. And this is not my room, by the way. This is like a store kind of a thing I have at my place जहाँ हम सारी चीज़ें रखते हैं. So anyways, so I'll just let it dry, and then उसके बाद जो है मैं इसको बताऊँगी आपको कि कैसा रिज़ल्ट आया इसका. और ये यहाँ से ड्राई होना शुरू हो गया है, बट जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा I'm gonna tell you guys how it feels and क्या फ़ायदे हैं and stuff, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो let it dry first. I'll be right back. Okay, so guys, I'm still like waiting for the mask to dry because मैं बहुत thick layer लगा के इस mask को. And I think you should put a thick layer of this mask because इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट होता है आपके जिसमें ज़्यादा मास्क होगा आपके फेस को ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा. दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड ये जगह जगह से ड्राई होना स्टार्ट हो गया है. जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद आई एम शो इट टू यू गाइस, एंड देन आई एम गोना वॉश इट ऑफ एंड देन शो द रिजल्ट्स. सो या, स्टे ट्यून्ड. Okay you guys, so the mask is dry now. ऊपर से थोड़ा सा ये wet लग रहा है, but it is completely dry. And now I can't even talk properly, but I'm gonna go and wash it off now, and then I'm gonna be like showing you guys the result. अच्छा, तो I just wanna say one thing. जब भी मैं कोई चीज़ recommend करती हूँ आप लोगों को, तो you guys should always do a patch test कि आपको वो चीज़ें सूट करें या नहीं करेंगे, because I will not be responsible if anything happens. So do a patch test, थोड़ा सा लगा के check करें. अगर irritation हो रही है तो फिर उसको मत लगाएं बाकी फेस पे. Anyways, I'm just gonna go and wash my face, and then I will be right back. Okay guys, so I have washed my face with plain water, ठीक है, और मैंने फिर फेस को टॉवल ड्राई किया है. आप उसको पेपर टॉवल से भी कर सकते हैं. I have a little redness going on my face because this mask deeply cleanse करता है आपके पोर्स को. थोड़ी सी स्किन में अगर रेडनेस आ जाए तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, वो 30 मिनट्स में काम डाउन हो जाती है. अगर ज़्यादा इचिंग होने लग जाए तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, हल्की सी आइसिंग कर सकते हैं. इट विल बी परफेक्टली फाइन. सो दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स. Let me show you guys my skin in proper light. Okay, so this is how the skin looks. A little थोड़ा सा ग्लो भी आ रहा है, एंड जो है क्लीन भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा. सो दिस इज़ हाउ दिस मास्क वर्क्स. ये डीप क्लेंस कर देता है आपके पोर्स को, बहुत डल स्किन को बहुत हेल्प करता है प्रॉपर ब्राइटन करने के लिए. एक्ने, पिंपल्स, स्पॉट, ये मास्क जो है दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन गर्ल्स. ड्राई स्किन वाले इसको प्लीज़ ट्राई नहीं करें बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट्स गोना रिएक्ट टू योर स्किन. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. समर्स के लिए मास्क बहुत अच्छा है यू गाइज. जिनकी ऑयली स्किन है, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए, इंटरव्यू जाने वाली लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है. Do try this out and let me know on my Instagram. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed it. And this is my go-to mask, you guys. Anyways, love you guys a little too much. Take care of yourself. Bye.